Can you tell me your name? Subhash Chandra. I'm just doing the voice check. Yeah, Subhash Chandra. My name is Alisha and today I'm in Katwadia Sarai. It's August 4, 2021 and I'm recording the oral history with Mr. Subhash Chandra. Sir, can you please tell me your name and your date of birth? Officially, I am born on 7th November 43. There may be 1 year, more than that. I mean, maybe 42, but records are not maintained. So I went to school also once in Sialkot, but stopped going because I cried too much and came back. I am Subhash Chandra, and we had a house in Puran Nagar, Sialkot. Puran Nagar actually is based upon Saint Puran. He was a disciple of Guru Gorakhnath. And there was a well in our start of the colony where there was a well, and in that well Puran's hands and feet were cut and thrown, and he was also thrown as a intrigue by the Rani of Sialkot. That's the story goes. And then Guru Gorakhnath ji came there and made him okay, and then he climbed back. So that's a Puran Nagar. It was a good landmark in Sialkot. My father was a doctor. He had a shop in Trunk Bazaar. Actually, Trunk Bazaar was making only steel trunks, and there are only few other shops. So he was a doctor running a clinic, and my mother was a teacher in government school. And anything. How many siblings were there and what were the languages that you spoke at home? We were speaking Punjabi only at home, and English was not popular those days in any case. We were 2 brothers and 3 sisters, and my younger sister was 2.5 years, and my elder brother was 11 years my senior. He was going into a 9th class. So when this partition thing started, there was too much of unrest all around. We used to go on to the rooftop and see fires burning at a distance, and we were all scared. Then the schools were closed. My mother was a teacher and her principal was an Anglo-Indian lady, Miss Mayo. And once we stop the camera, then we can, because then it comes in the recording. Actually, even I have questions, so Abhi, I'm just letting him go. Do you want him to talk about his sister? No, that may be irrelevant. No, who was older one? She was married and all that. Okay, take it. Yeah, I have that question. Later on. And the principal of the school, she told my mother that it's better you go away from Sialkot, rather you can go to Jammu area because that's a Hindu state. And then after 15th August, you can come back. So it was about June end, when early in the morning, 4 o'clock, we were woken up by, we were all small kids and we were crying. Why all this sudden going away? And we took a bus. My elder brother and my father remained back to look after the house or whatever. And we went by bus to, my mother had a friend in Udhampur. So it was in J&K. So we went to that. There was a village near Udhampur where we all put up, and we were just wasting time going around. There was a river there, and we used to just frolic around. But there was always a tension with my mother and elder sister that what happened to brother and father. And those days there was no mobile in any case.
So we used to depend on the people who are coming from that area. How is Sialkot? How is Sialkot? And then one person came from Sialkot in that village. He said, I have seen your father sitting in the train. And but that train, when it started from Sialkot, after about 5 miles, the track was broken by the hooligans, Muslims, and the whole train was attacked with spears and swords by those guys, and they had to jump out from the window of the train, and they hid themselves in the fields. This is what we came to know when my father reached Udhampur. And also, he told us that when they came to evacuate him from that place, he said, you can bring whatever you want to bring, some big boxes or what. So my father never knew about what ladies do with their valuables or whatever. In any case, our valuables was not there, because just before partition, my father had built a small hospital. The building was ready. It was next to our house, and it was opening ceremony was done by our Guruji, and the whole cash and jewelry was invested in that hospital. So he did not have anything in his hand, cash. So he thought there are 2 boxes. He put them up in the military truck and put it in the train. Eventually that also had to be left. And later on my mother told that there were only daris in that box. So that it was not something valuable. Those were the days. Anyway, life was more important than all these belongings. And when he reached, they were all bleeding from the knees, from the hands, and because they were crawling at night time in the fields to come to Udhampur to avoid any attacks. Also, in daytime they used to hide and survive on the fields. Somehow, I don't know how much time they took. I was a child. I don't know how much time they took. In any case, when we reached there, so we came to know that we cannot go back. And my younger sister was having loose motions like hell. And those were very terrible times and uncertainty in life. My mother used to curse that girl, small girl, and say, why don't she die? Then you see, we took a bus from Udhampur to go to India. Now India, there is a Ravi ka Pul hai, the Madhopur bridge. So we crossed that, and before that, I think the road was flooded. I have seen there were a lot of rains in 1947, and the nalas, they were full of water, and I have seen dead bodies, red dead bodies floating in those waters. Not many, but 2, 3 I still remember. And then the bus broke down in that river Uj. There is a river called Uj. Now there is a bridge over there. Those days it used to be on the road. It used to flow. It was a Barsati Nala. And once it broke down, then the driver said, you have to make your own thing too. Then we were put on the shoulders of father and brother and brought to the crossing side.
There we had some atta with us and some other eatable things, and we had to take a pony. And pony, we did not have money to pay to that pony chap, because all the cash, as I told, was invested in that building hospital. So my father gave his wristwatch to that fellow, and the younger ones were put on the horseback along with my mother. Then we used to alternate. I remember that scene, and it is drizzling, and we crossed that Madhupur bridge. And when we crossed the bridge, everybody is happy, shouting, "Oh, India aa gaya, Bharat aa gaya, oh, Azad Hindustan aa gaya." And I saw ocean of humanity sitting in the muddy fields, and total chaos. We also found a corner. We plonked ourselves in that dirt, muddy water. And I remember we used to go here and there to break some sugar cane. We used to chew that to fill up our tummy. Then the military trucks came, and they told us that wherever you want to go, we'll take you free. So we had nobody in this except my father's brother-in-law. His sister had died. The brother-in-law had married second time, and he was staying near Jallianwala Bagh in Amritsar. That place is called Ramanand Bagh. So we went to Ramanand Bagh. Manmohan Krishan Bhaskar was his name. Very nice gentleman. But once we reached there, we found already about 20 to 25 people from Pakistan had already landed in his house. There are no place in his house. So we used to sleep in the open. If it is raining, we will just sit under the tree. But this arrangement was not for many days. As it is, my father was keen to move away from this place. And then my mother, who was a teacher in Sialkot, she went to the government school of girls in Amritsar. And there the school was closed, it was empty. And they said, the government of Punjab has ordered any teacher who has come from Pakistan and comes to any school, she is transferred to that school. So my mother was transferred to that school. So we shifted to the school. And I remember frolicking around in that total, benches. We used to just play hide and seek, some stray dogs. Those scenes are in front of my eyes. But then she got 2 months advance of salary. So with that we started our life in India. There was a refugee Muslim colony, Sharifpura in Amritsar. Now there is a huge bus stand erected in Amritsar. It used to be called Pathi ground, means people will just do the gobar pathis. It was a desolate place. Now it is a 5-star hotel, 3-star hotels are there. So it was a Pakistani property and Muslim property, and there was a Gorkha who was holding a house. He was living. So my father gave him 10 rupees to get that house. So we started living there, and about 100 meters ahead there was a shop. Usme another Gorkha was there. Usko 10 rupees diye, and he put up his shop. Then he went to a place where these old furnitures were being sold from the people who have run to Pakistan. So he purchased a table and a bench
for the patients. That is how we started our life in India. And I have not seen much. To add to the memories of Sialkot, I recapitulate that my father was a self-made man. He left his village Barthamala, which is in Sialkot, in Tehsil Daska, and he went all the way to Lahore and Peshawar. He had his self-education with a doctor in Peshawar, and he came and set up his business clinic in Sialkot. Fully self-made man, but he prospered. Like he had one built house in Puran Nagar and one plot on the right side of the built house where we used to tie our buffalo. And he was very keen because he was from a village stock. So he was very keen to have a buffalo always. And this practice he continued even in India, in Shripura. So, and I remember when my mother used to have the summer vacation, we used to go and live in our village, Barthamala. I have very good memories of my cousin sisters having, gudiya ki shadi, gudiya ki shadi. Then somebody has died and they will mock funeral. All these things they used to do. I remember that clearly, and I have very sweet memory of our well, where that water used to come with, there is a rehat. With that, so we had a land there, and due to that land, we got a land in lieu in Punjab. Sultanpur Lodi. The land is still there, and my father was a keen non-veg, and my mother won't allow. So I remember those bickerings in any house like that. Also, he will go for a night show, and my mother will not open the door to him. So I remember he used to take me along for the night show as a child to get back into the house. So these are some memories. So I went to school once, I cried, and then never went. Then my father used to take me to his shop, and he will say, write Alaf, Be, Pe, Urdu. And then I could not write. I was very small, and I used to go to the next shop fellow and ask him to write for me. Then I will show it to my father, and he will feel very happy. These are small memories. So that means except Punjabi, Urdu was also... Urdu was a very common thing. In fact, I learned Urdu from my mother when I was in 9th class in India. In our summer vacation, I said, Mataji, I want to learn. So she taught me the alphabets and also practice. So now I can read slowly, but I can't write. But Urdu language I can understand fully, like poetry, difficult words, all I know. What were the holiday places या फिर ऐसे घूमने की जगह क्या थी वहाँ पे? Yeah, very good question. It is very strange to know. I mean, people don't know much that we used to go to Jammu for picnic. There is a Thandi Nair. There is very ice cold water in Jammu, and that was used. There used to be a direct train from Sialkot to Jammu, and there we used to go in the morning, have lot of mangoes, put them in that cold water, and eat that mango, do swimming. I remember that very cold water. Later on I tried to locate because now I am married in Jammu city.
but that raunak is not there, and also the water has shrunk. I don't know whether as a child I had a memory of big nala, and or it was a canal, but Thandi Nair usko bolte the. And in the evening we used to go back in the train. We used to come without father, elder brother. My mother will bring the siblings. All of us used to go, and train was quite comfortable those days. So that is one thing which people may not know presently. Yeah. Yes, start. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸਨ। ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਪ ਜਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਵੀ ਹमें पता लग गया कि भाई एक कोई बिजली पहलवान है, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਕੇਟਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਟਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਬਰਾਊਨ ਚੱਕ ਕੰਬਲ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਬਲ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਘਸ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਠਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਟੇਲਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੇਲਰਿੰਗ ਸਿੱਖ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰੇ 'ਚ, ਤਨੀ ਰਾਮ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋ यही है शुरू से। बचपन में जब आप वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे रिलीजियस माहौल कैसा था डिफरेंट रिलीजन के बीच में, और आपके पापा के कोई बाकी धर्मों के दोस्त वगैरह थे? मेरे फादर जिन्हें सारे पक्के यार सन, सारे मुसलमान सन, और वो बड़े दिलदार बंदे सन, और कभी पाकिस्तान तो आने के बाद भी वो उन्होंने याद करते रहते सन। और वो हमेशा मैनू कहते, मैं तो बच्चा सा, पर हमेशा वही कहते कि मुसलमाना वर्गे ही दोस्त कोई नहीं होंगे। मतलब पंजाबी का करैक्टर वैसे भी बड़ा खुला डुला, जनरस, रोटी पानी ये वो, और जफ्फियाँ पा के मिलना सारे, वो नेचर उत्थे सगों ज़्यादा है इंडिया के पंजाब नालों, क्योंकि असी बाद जो पाकिस्तान गए हाँ देखने अपना घर, वी फेल्ट ये लोग जड़े ने बड़े दिलदार लोग। सो ही हैड नो बैड फीलिंग्स टुवर्ड्स द कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान, ऑफ पंजाब। इट वाज वेरी नाइस, दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू से। एनी मेमोरीज कि वहाँ पे जब कोई त्यौहार होता था, ईद दिवाली, जब तब मनाई जाती थी? कुछ याद नहीं। एक त्यौहार मैंने मतलब क्या फंक्शन हुआ था हमारे घर में, क्योंकि हमने जो हॉस्पिटल बनाया था तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी, वो हमारे गुरुजी आए थे,
स्वामी मोहन गिरी हरिद्वार में होते थे, तो आए थे, ही वॉज वेरी वेल नोन। वो फिर बड़ी वड्डी उन्होंने पूजा की थी। आई रिमेंबर अबाउट 200-300 people must have come to attend that ceremony. We gave lunch to everybody that is there, but I don't I remember one thing that my elder brother was very keen patang udani, gudiyan udani, so I used to be chamcha and ਮੋਂਟੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਛੱਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਸੀ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੂਸਾ ਸੀ ਗਾਂ ਮੱਝ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤੰਗ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਨਰਿਟਨ ਲਾ ਕਿ ਬਈ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਮਾਈ ਐਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸਕੂਲ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2012 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਈ ਮੇਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕਿ ਬਈ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਉਹ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਸ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਾਟ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਆਫਟਰ ਦ ਲੰਚ ਦੈਨ ਹੀ ਕੇਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਉਹ ਮੁਝੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। तो मुझे याद है मेरी माँ ने पतासे वंडे सन मेरे स्कूल जाते, विच वॉज ए कस्टम दोज डेज। लेकिन आई नेवर सा द स्कूल अगेन। दैन आई से मैं उत्थे फादर की दुकान से बाहर बह जाता था जाके, तो सारा दिन ऐसे टोकियाँ मारता रहता। Did you ever hear about World War II या फिर World War II तो नहीं, but because I am 43 born or 42 born, तो that नहीं है, because World War was not in India. But I have seen the publicity of cigarettes and tea by aeroplanes. Aeroplanes used to come low. Oh, they used to throw cigarette packets in the colonies, free, and चाय भी, क्यों उन दिनों चाय कोई नहीं पीता था, तो चाय दे भी पैकेट सुटते सन और सिगरेट भी सुटते सन। एंड to popularize maybe that was their way of advertisement. But I remember those scenes. Then एक और मेरी मेमोरी छोटी सी कि आई यूज टू हैव ए ब्राउन कैट, इट वॉज माई पेट कैट, टॉम कैट, एंड इट डाइड, एंड आई रिमेंबर हाउ आई वेंट क्राइंग एंड पुट इट अंडरग्राउंड इन द प्लॉट। ओपन स्पेस थी ना हमारे पास, तो उसमें मैंने उसको दबाया था। और हमारे घर के दीवार में एक छेद था, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, and we used to see them almost every day बैठे हुए। This is my memory। मेरा एक मुसलमान दोस्त ਸੀ ਭੋਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। We used to play hide and seek। ਉਹ ਮੱਝ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। My elder sister, who is 2 years my senior, she is in New Zealand now. We used to 3-4
बच्चे we used to ऐसा खेलते थे सब करके Oh, no. रात को जगते थे, दिन में छुपते थे। वन वो बताया मैंने वन ब्रांच ऑफ आवर फैमिली सेटल्ड इन बिहार दैट माइट बी रेलेवेंट ये सारे कहाँ गए? कोई एमपी गया, कोई वहाँ गया, कोई यहाँ गया। अच्छा, आप अपने कजन बोल रहे हो, दसका वाला या व्हाटएवर बर्ता वाला, वेयर आर दोस कजन्स? दे आर इन बिहार पटना वो पहले कैंप में रहे पानी ले लो आप, कोई रिफ्यूजी कैंप जस्ट तो सैक्रिफाइस कर। क्योंकि अभी तो वो सारी चीजें तो बहुत सारी And I think you should cover their going back because that is an adventure. That is in the last part, Okay. like the hope वाला part. So do you remember any अपना family member जो migrate करते में से आप लोग बिछड़ गए या वापस मिले या वो कहाँ गए? या डेफिनेट ये ऐसा होया सी कि ਅਸੀਂ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਾਂ ਥਰੂ ਉਦਮਪੁਰ तो इस करके ਅਸੀਂ ना वो छुरेबाजी नहीं देखी जिस तरह मर्डर हो रहे ने या एक दूसरे ਦਾ लेकिन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ और मेरे ब्रदर फादर ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗਾਉਂ 'ਚ ਉਹ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜਨਾ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ तो उन्होंने तो की करना ही वो मझ गां पकड़ी अपनी भैंस पकड़ी चलो जुलूस बना के जा रहे हैं एंड दे वर हैविंग लॉट ऑफ टफ टाइम बट सम वी हैड वन मेरे फादर दे चाचा सी दयाल चंद खुशहाल चंद निहाल चंद तो निहाल चंद वाज मर्डर्ड in that procession coming towards ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ or whatever ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟਰੱਕ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਟ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹੂਕਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਟਨਾ ਇਮੇਜਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਟਲ ਕਰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਭੜਥਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ तो ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਪਟਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਜੇ ਤੇ ਚੱਲੋ तो सारे वो जो दो बेटे मोहनलाल सोहनलाल और उनकी वाइफ और बहुत सारे बच्चों के साथ ट्रेन में गए या किस तरह मुझे नहीं पता बट दे वेंट एंड टू पटना तो पटना में पटना शरीफ में एक रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था इमेजिन पंजाबियों के लिए मतलब पंजाब से जो आए वो सारे वहाँ थे और मेरी बुआ फादर की बुआ उनके बच्चे वो भी वहाँ थे एंड देयर हैज बीन सम वेरी बैड इंसिडेंट इन दैट कैंप आई मीन वन ऑफ माय बुआ's son he had affair with my chachi oh then she was burnt alive in that situation तो मेरे ख्याल से मतलब it is attributed to this upheaval only we did not feel so much at that time because we were in Amritsar ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੋਂ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ and my dad chacha Son Lal he could never settle in his life later on ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬੈਂਗਲੌਰ so once मैं ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਪਟਨੇ and I saw him making pakoras and chai on the roadside and he had married a local widow Biharan उनके पहले बच्चे थे 2-3 गरीबी sort of so it was shocking for me because by this time we had stabilized in Amritsar and but my other chacha who was the youngest brother of my father Mohanlal he was a wearer trained wearer so he set up in a nearby village and
near Patna. So he became a Punjabi Vaid, famous, and he was a prosperous man. And later on, उसमें भी my father wanted these brothers to come to settle in Amritsar. We went all the way to Patna, उनको convince करके मोहनलाल की फैमिली कन्विंस करके तो ले आए. 6 महीने 7-8 महीने रहे अमृतसर एंड उन्होंने दी दुकान भी सेटअप करा दी जलियांवाला बाग दे कोई रामानंद बाग दे कोल. But eventually they did not stay, they went back. And emotionally, you see, this is a setback for us in the sense that branch is cut off. Similarly, my mother, she had 2 brothers. एक तो teacher सी वो थे. He was very bright fellow of his time. He was very pioneer in getting graduation before partition. ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ. ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਮੈਰਿਡ ਸੀ जुनार ਦੇ मध्य प्रदेश. तो उस साली ने कहा जीजा जी तुसी इत्थे आ जाओ. Can you imagine that one branch has gone to जुनार दे near in Madhya Pradesh district Chhindwara. So I went there 3-4 years back. Twice I went to again connect with them. So इस तरह इमोशनल चीज़ां बिखर जाती हैं. So this is all due to partition. आपके कोई जानने वाला ऐसा था कि जिन्होंने रायट्स में मतलब भाग लिया हो ऐसे वायलेंस करने में? मेरा कोई नहीं. वो दादाजी का दुकान है, कैसे डॉक्टर निकले थे? Who he has done. Also, I heard from लस्सी में रख रहे थे. हाँ. you tell when. जब वहाँ से लोग माइग्रेट करने के लिए मतलब निकल रहे थे तो आपको याद है कि लोग अपना सामान कैसे लेकर आ रहे थे या फिर क्या लेकर आए थे, क्या छोड़ कर आ रहे थे? It was totally disorganized sort of. जो पैनिक में तो लोग निकल रहे थे, जिनके पास कुछ कैश वैश था उन्होंने तो अपने पास ही रखा. ज्वेलरी जो है वो अपने पेटीकोट के अंदर कर लगा दो या कहीं कर दो. लस्सी के जो होते हैं ना वो घड़े मिट्टी के वो सिर पे रखे आ भैया ये लस्सी पीने वास्ते रखी है. तो लाइक दैट सम पीपल मैनेज टू ब्रिंग ज्वेलरी. बट we did not have any jewelry with us because it was all invested in that making that hospital. So that way. Is that hospital still there? No, it is totally broken and it is made a 3-story building as a residential. We went there in 2012. So we saw वो तो है ही नहीं. I couldn't recognize that place. Name of the hospital. Subhash Villa was my name was written outside. अच्छा ये तो काट दिया शायद. नहीं, it's नहीं, recorded. it's recorded. So you edit. So then let's do the hope story पहले. Yeah. Actually, he has tell that the hospital was named, his father had named the hospital. My name was written Subhash Villa. So I did not know Villa. My eyes are blue, तो मैं Villa. So I used to sing a Subhash Villa लिख देता. Whereas it was later on when I grew up I found मतलब कि village वो Subhash मेरे नाम थे. Because I was the youngest son of the family at that time. Later on we got another brother in India. But Subhash Villa was the hospital's name. No, it is broken. I mean, it's not there. When I went, there is a very good posh building in that place. The house where we used to stay, it's all in broken condition. So when did you plan to visit back? अब वापस कब आपने सोचा कि अब जाना चाहिए, अब देखना चाहिए, और अब कैसे गए, पूरी जर्नी कैसी थी आपकी? बड़ी स्टोरी है. You see, मेरे दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ ਪਲਿਆ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ. And I could never mentally relax.
तो फिर एक बार की होया, बॉर्डर खुले सन क्रिकेट वास्ते, क्रिकेट मैच होना सी लाहौर। पहले वो इंडिया च ही आए सन तो वो पाकिस्तानी बड़े साढ़े पंजाब च आए सन, श्रीपुरे वगैरह एरिया। उदों असी उन्होंने कोका कोला और ठंडे स्कंजवियाँ पैनियाँ, छोले भटूरे खवाए। तो देन वी हमें वीज़ा मिल रहा था लाहौर जाने का। तो मैंने ना वो टिकट बुक करा ली ऑनलाइन, 1000 रुपये की टिकट उन दोज डे, पता नहीं साल का तो मुझे याद नहीं। एंड मेरी बड़ी भैन है, मेरे तो 8 साल बड़ी है, वो कहती मैं भी चलांगी, तो वो भी टिकट कराई। एक मेरा दोस्त सी एयरफोर्स था सूद, असी तिना दी मैं टिकट करा ली। तो जो मैं वीज़ा लैन गया तो मैं क्या फिर असी सियालकोट भी आवांगे, वो वीज़े वाले ने कहा, तो कहता नहीं जनाब तुसी उत्थे नहीं जा सकते। मैं क्यों? कहता जी ये लाहौर के वास्ते वीज़ा तुहानूं दे रहे हैं, तुसी लाहौर ही जाना। मैं क्या अच्छा। मैं चुप हो गया तो मैं घर आ गया। तो फिर मैं सिस्टर नाल गल की, मैं क्या लाहौर जाके वापस आंदा तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर वो पैसा भी गया और विजिट नहीं हुई, बट आई स्टिल यूज टू मिस। फिर मैं ये माई चिल्ड्रन न्यू, इन्होंने बड़ा सी कि भाई मेरे फादर जाना चाहते। तो माई डॉटर इज़ ए डॉक्टर इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। तो ये काफ़ी कॉन्टैक्ट बनते रहते हैं पेशेंट्स से, पाकिस्तान तो भी आते हैं। तो किसी ने इन्हें फिर गल की। दैन मेरी प्रॉब्लम ये सी कि मैं एयरफोर्स तो रिटायर होया, तो तुसी सारे पाकिस्तान जा सकते हो, तुसी सियालकोट नहीं जा सकते। फौजी बंदा सियालकोट नहीं जा सकता क्योंकि उत्थे उन्होंने नंबर 1 स्ट्राइक कोर का हैड ऑफिसर, और सैकेंडली न्यूक्लीयर कंट्रोल जो है ना वो भी उत्थे है। सो वी आर नॉट अलाउड टू विजिट। तो ये शी ट्राइड एट ए वेरी हाई लैवल, माई डॉटर जो पाकिस्तान का अंबैसडर स्पेन च सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कॉन्टैक्ट कढ़िया। उन्हें कहा कि तुसी जाओ डिप्टी हाई कमिश्नर को मिलो एंड यू एक्सप्लेन द थिंग कि योर फादर इज फ्रॉम दैट प्लेस, जाना चाहते हैं। उन्हें सानू ये भी कहा सी कि जे तुहानू वीज़ा नहीं मिलता सियालकोट का तो तुसी लाहौर भी टर्न डाउन कर दो। दैन दे एग्री। जो मिले मैनू वीज़ा तो इन्हें भी अपना करा लिया, मेरी बेटी ने, तो असी दोनों ने कराया। तो मेरी बड़ी भैन जी है who's 8 years माई सीनियर, वो कहती मैं भी जाना है। वो कहती भाई कि मैं भाई मैनू तो ज्योत्सना ने कराया, मैनू तो पता नहीं किस तरह होया, तो तुसी देख लो। वो कहते हैं मैं भी ट्राई करना। वो मेरे वीज़े की कॉपी लैके उत्थे पहुँच गए, वो भी डिप्टी कमिश्नर को ही गए। और कहा जी मेरे ब्रदर इन लॉ जा रहे हैं, मैं भी से वो डस्के च पैदा होए ने मेरे जीजा जी। तो वो तो मेरी बड़ी भैन, उन्होंने वीज़ा मिल गया। जो उन्होंने मिलया तो मेरी जी न्यूजीलैंड सिस्टर उन्होंने पता लगा, ਉਹਦੀ तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं सी क्योंकि वो न्यूजीलैंड की सिटीजन है, नॉट इंडियन। तो उसनों फिर वो अपने पुत्र नाल तैयार हो गई। सो वी वर 6 नवंबर 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ वी वेंट टू पाकिस्तान। ਉਹਦੀ भी बड़ी स्टोरी है। यू सी पाकिस्तान जाने वास्ते या तो तुसी बाई एयर जाते हो, या बाई ट्रेन जाते हो, या बाई बस जाते हो। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰग शुरू च हो जाती है, फिर तुसी सील हो जाते हो। सो you are cleared to go to Pakistan right in Delhi, but we were going by road। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਟਰੀਟ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਂਡ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਨੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਲੈਣ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋਸਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੱਕੀਲੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ हाँ जी परमिशन तो लेनी पड़ती है बिकॉज यू कैन नॉट वॉक अक्रॉस द बॉर्डर। तो फिर इसने परमिशन ली, जाने से एक दिन पहले ली। देन वी वेंट टू अमृतसर, स्टेड फॉर a day, and then second day we went by and then we found the fellow who was to receive us right at that border. So he was also an influential man and well connected. तो वो border पे आया हुआ सी with his wife and child. So I could make out के दूसरा पता की है उत्थे you have to report to the police station every day. I mean new place जिस तरह ਅਸੀਂ ये ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲਾਹੌਰ ਠਹਿਰੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਵਿਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। then you are going to ਸਿਆਲਕੋਟ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। so we are get into this. He said uncle will enjoy. आप मुझसे लास्ट डे जब मैं उनके साथ हम डिनर कर रहे थे, फोन पे फोन आया जा रहा था, फिर हमें तो मैंने पूछा तो कहता नहीं कुछ नहीं। देन ही टोल्ड लास्ट डे व्हेन वी वर गोइंग कि कहते वो ऐसे ही ना एयरफोर्स के यहाँ से कंटिन्यूस पीछे पड़े थे, घर में भी आए उनके ISI वाले, पुलिस वाले की भाई उसने एक ही इन्फ्लुएंशियल मैन, मतलब दे आर बिग लैंडलॉर्ड्स। सो ही सेड कि अंकल को इनका सबका एक्सपीरियंस है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, दे कम टू सी देयर होम्स, कोई परेशान नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा। There are a lot of sensitive information, Yeah. so that can't be put No, on No, the but public then you can domain. say, no, you can probably You say did not that tell about No, the person's we name. can just remove the like maybe ISI. yeah all But these कहना कि दो organizations. whenever any Indian person No, but- goes, there is a जब आप पाकिस्तान रोड से पहुंच गए तो फिर आप पहले कहाँ गए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, पाकिस्तान पहुंचने के बाद हाँ, तो हैरानी की बात ये थी कि हम सोच रहे हैं कि भाई हम विंग कमांडर हैं, हमने किसी को बताया नहीं। और दूसरे दिन जो हमने 2 टैक्सियाँ की तो ड्राइवर कहता है साहब जी तुसी विंग कमांडर। सो आई केम टू बाई केप क्वाइट। मैंने कहा इसको क्या बताऊँ मैं कि भाई क्या हूँ, कुछ नहीं है। एंड हम जिमखाना, लाहौर जिमखाना ठहरे सी। वेरी नाइस अरेंजमेंट मेड बाई अकमल, आवर फ्रेंड इन लाहौर। तो फिर असी टैक्सी करके वो टैक्सियां ले गए सियालकोट। सियालकोट पहुंचे तो पहला राइट साइड ते सड़क जाती है साढ़े पिंड नूं, पड़था वाला जिथे मेरे दादा जी की लैंड है तो सारा कुछ है। वो मेरी मैमोरी सन वो भी उत्थों दियां भी, तो मैं जाना चाहना सा। फिर मैं उत्थे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਪਿੰਡ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਰ, तो ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਨੀਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਹ बड़े लंबे आदमी का क्या नाम था? नहीं, वो जो लेडी थी ना उसका भाई, और
महल बड़ा ऊंचा लंबा 6 फुट 6.5 फुट एनीवे वो मिट्टू खां और दो सारे लैंडलॉर्ड थे वहाँ तो दे वर इन्फॉर्म्ड कि इस तरह इंडिया तो बंदे अपना घर देखने आ रहे हैं so they all the old people of that area were assembled in one place and they welcomed us ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭਈ ਮੇਰਾ ਦੋ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਦੋ ਚਾਚੇ ਸਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੀਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ 5-6 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੈਲਕਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲੈਵਿਸ਼ ਲੇਆਊਟ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੇ ਕੇਕ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਲੋਪ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਸੈਟਲਰਸ ਤੋ there was a huge crowd gathered I could make out there are some security person also ਉਹ civil clothes ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ I could make out anyway ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੇਡੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਓ ਆ ਕੇ ਰਹੋ कहने की बात है तो माई सिस्टर सेड नहीं आप हसो खुश रहो असी भी ठीक है खुश हाँ लाइक दैट सो आई हैड a little water from my house I drank that water फिर असी फिर दो जगह ते चाह पीती फिर मैनू एक कोई बाजार जी सी उत्थे मैनू लै गए उत्थे मत्था टेको जी फिर उत्थे मत्था टेका फिर वो सारे इकट्ठे हो गए सारे पिंड दे वो कहन जी सुभाष चंद्र जी तुसीं भाषण दिओ फिर मैं दसिया अपना सारा घर का कि किस तरह असीं केस हैं इत्थों मेरे चाचे सन दादा सी इत्थे मेरा फादर सियालकोट सी तो उत्थे फिर नारे लगे मैनू हार पवाए जीजा जी नूं भी हार पे ते भाई सुभाष चंद्र जिंदाबाद सुभाष चंद्र जिंदाबाद वेरी स्वीट मैमरीज फिर असी उतों निकले फिर असी गए सियालकोट पहले असी होटल च ठहरे होटल 5 स्टार होटल सी नाम तो मुझे याद नहीं एनीवे दैट ताज होटल था वो उसका मालिक जो था ना वो चीफ मिनिस्टर के बेटे का था चीफ मिनिस्टर उन दिनों ये था नवाज शरीफ का छोटा भाई तो वो दोस्त था अकमल का तो जो बड़ा अच्छा पता है क्या रात को हम पहुँचे 8 बजे वहाँ का डिप्टी डीएम जो नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट में होता है वो सलवार कमीज पहनी 6 फुट का बंदा हाथ से बैंकुएट फुल्ला नहीं फड़ी हुई तो बुके ते वो आया गेट से खड़ा वेलकम जी वेलकम पुंज साहब मैं हैरान हो गए जी तुसी कहते जी मैं इतने डिप्टी डीएम ते तुहाडी इस्तकबाल वास्ते खड़ा मैं तुसी किस कहता नहीं जी नहीं तुसी साडे and we were really you know welcomed heartily अगले दिन साडा एम ते सी मकान देखना सो सवेरे बाहर निकले तो मैं क्या भाई पूरन नगर जाना है तो इमेजिन वो जो होटल था पूरन नगर के सामने ही बना था और अक्रॉस द रोड बीच में जीटी रोड है वो जीटी रोड पे हम बचपन में सैर किया करते थे पर हम नक्शे बदल गए थे तो मुझे पता नहीं था डिस्टेंस के हमारे घर के बाहर ना बहुत बड़ा मैदान था उसमें कुछ भी नहीं था उन दिनों 47 में तो ये सारा होटल बने मार्केटा बनी है तो बाहर निकले तो मैं क्या भाई पूरन नगर जाना है तो कहता जी वो तो वो सामने
मैं चलो फिर वो कार लेके उसने जो सड़क जीटी रोड क्रॉस की सामने, मैं क्या पूर्ण नगर, कहना जी यही पूर्ण नगर है। मैं हम उतरे तो गली पहली में घुसे तो लेफ्ट में एक दुकान थी जो उन दिनों नहीं होती थी 47 में। वो 2-3 लड़के बैठे गप्पा मार रहे थे। मैं क्या भाई ये पूर्ण नगर है? कहता हाँ जी। मैं क्या इत्थे खूह ਹੁੰਦਾ ਸੀ? कहते जी वो इतने है खूह। वो खूह वाज अबेंडन टाइप, मतलब अब कुछ पूजा शूजा नहीं होती थी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਬੇਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਰ ਹੋਤੇ ਨਾ, ਬੇਰ ਕੀ ਪੇੜ। ਮੈਂ ਬੇਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਐਨੀਵੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ, ਲੈਫਟ ਮੁੜਿਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 100-150 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਮੁੜਿਆ ਔਰ ਗਲੀ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗਲੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗਾ। ये सब कुछ करते कराते फिर मैंने ख्याल आया कि मेरे बड़े भाई की तो मेमोरी मेरे से ज़्यादा है क्योंकि वो ग्रोन अप थे। फिर मैंने वो किसी का फ़ोन लिया मोबाइल, मैं गुड़गांव में रिंग किया। मेरे बड़े ब्रदर रिटायर हो गए उत्थे रहते हैं, तो वो उन्होंने क्या कहते कुआं खुई मिली है? मैं हाँ। कहता कोई तो 15 कदम चल तो फिर खब्बे मुड़ जा, खब्बे मुड़ 15 कदम 14-15 कदम लै तो फिर गली आ जाती राइट से, वो सीधा चला जा, सामने मकान है, एक खंबा। आई रीट्रेस माई पाथ। मैं खुई तो वापस गया, वो फिर वापस उस तरह गया, चल के गया, सामने गया तो उही घर सी जिथे मैं सब तो पहला ठहरिया सा, वही सी। पर इस नक्शा इस तरह बदलिया सी कि साडियां 3 सीढ़ियां सन, चढ़ के घर बढ़ते सन। हुण की होया सी कि वो 60-65 साल हो गए सन तो वो भर्ती पै के इट्टां भर के वो बराबर हो गया। सैकेंडली ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਇਕੱਲੀ ਘਰ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜੋਸੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਲੀਡਰ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। वो हिंदुस्तान तो आए ने अपना मकान देखकर, तो असी सारे अंदर बढ़ गए। असी अंदर बढ़ गए, मैं जाते ही अपना मकान पहचान लिया। उत्थे हैंड पंप सी, वो हले भी है, हैंड पंप हैगा लेकिन वर्किंग ऑर्डर च नहीं। और लाल साडी फ्लोर होंदी सी, उन्हां दिनां च स्टाइलिश गिनिया जाता है कि रेड ऑक्साइड सीमेंट लगा के फ्लोर बनानी, वो फ्लोर दी नोट की। पर साड़ा मकान डीप होंदा सी, लंबा, ਉਹਦੇ ਵੀ 2 पोर्शन होए ने। बैक पोर्शन किते भी हो गया, इत्थे सिर्फ ईटां उटां 2-4 पईयां ने टुटियां पईयां दीवार ते। सो इट वाज वेरी स्मॉल पोर्शन विच इज द ओरिजिनल, छोटा जिहा रह गया। फिर ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ पड़ोसी सी ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, मतलब नाट साਡਾ पड़ोसी ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਹਤਵੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਲੋਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ 100-200
50 साल तो हो गई, वो सब कोका कोला पी रहे ने, चावा पी रहे ने। उसी गली ना एंड के उत्ते राइट साइड ते साडी 4 फैमिली सी दोस्तां दी, उन्होंने उसी सब्जी वाला कहने सन। दे वर होलसेल डीलर्स ऑफ वेजिटेबल्स। फिर मेरी भैन, मेरा दोनों भैनां उन्होंने घर गई, उसके घर जाके फोटो खिंचाई। तो इट वॉज सॉर्ट ऑफ खाली जिहा सी, कोई बंदे नहीं दिसे उत्ते, लेकिन वो फोटो है ने, वो जाके सब्जी वाले सी। एंड उन्होंने दी कुड़ी जिहड़ी सी उषा, शी इज़ मैरिड टू अनदर एयरफोर्स ऑफिसर ओनली। और लेटर ऑन आई एस्टैब्लिश शी डिड MSc and PhD in zoology, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैं चंडीगढ़ पढ़ना सा उन्होंने दिनों, तो वी यूज्ड टू मीट, ते सियालकोट दियां यादां करदे सन। सो नाउ शी इज़ रिटायर्ड, I mean her husband is retired, Bajaj. So that was a very good trip. उसके बाद की होया कि मैनू उन्होंने सियालकोट की याद नहीं आती, जो मेरे वो सी ना दिमाग दे विच अपना घर याद आना, गोस्ट जिन्हों कहते हैं, वो दैट इज़ रेस्टेड। So I am at peace, and basically due to my daughter and her efforts, मैनू उत्ते एयरफोर्स अफसर ने पहुँचा दिता। तो सियालकोट भी असी घूमते फिरते सन, तो वी वर केयरफुल कि भाई वी शुड नॉट गो टू द कैंटोनमेंट एरिया। हालांकि कैंटोनमेंट एरिया वाज वेरी नाइस, बट वी डिड वेंचर में वीर ज़रा वाली स्टोरी ना बन जाए, कोई पता नहीं होता ना क्या हो जाए। Because of the same strictness we are also using in Delhi. Delhi is in the 3 portions for Pakistanis. Lal Killa is out of bound. That area is out of, your area is out of bound for them. And then there is New Delhi, then there is NCR. So they have to take permission कि भाई कित्थे जाना है. And you cannot go, suppose you come to New Delhi, you can't visit Noida. तो ये सारे रूल जो म्यूचुअल, बट वी फाउंड Lahore was a very beautiful experience. I especially went to Government College Lahore. It has produced great writers, IAS. Our air chief Lal was educated there. Kamini Kaushal is a student out there. So then we went to Ranjit Singh's palace. There's a huge one. Then there's Jahangir da Maqbara, very desolate place. The area is huge, bigger than Humayun ka tomb, but mostly lawns. Building is small, but hardly any visitors. But this place is very popular. Ranjit Singh da museum, that is very popular. Roads are beautiful, and there is a Ichogil canal going right in the city. It's a very nice experience. Neat and clean, much cleaner than our cities in India. And I saw that people are very healthy, happy-go-lucky, and there is no burqa. Burqa is only in India, where Hindus are there. Maybe they are trying to show their identity. Whereas there hardly one or poor people, they are wearing burqa. Otherwise in Jamkhana we staying and ultra modern ladies and girls, no burqa. A nice visit we had. Another thing, that the day we were to leave, Kasab was hanged in India, and we got scared. मैं कहते थे हिंदुस्तानियां फड़ लेंगे या रॉइड्स हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा. सो मैं अकमल ਨੂੰ रिंग ਕੀਤਾ. मैं कहा यार ये की हो गई. कहता
अंकल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहते कोई प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम की नहीं, कहता है वो असी कह देता है इंडियन ही, वो पाकिस्तानी नहीं सी, he कहते we have disowned him, there is no newspaper, there is no TV coverage, so they are absolutely normal, so we came back without any big hassle. जब आप गए लाइक डिड But my wife, No, we got lot of ladies suits. लेडीज सूट्स, ये लेडीज ने पहने, मैं आदमी लोगों ने क्या लेना था, वी विमेन बाय एनीथिंग। यू मेंशन कि आपके जो पापा थे वो एंगेजमेंट रिंग उनके पास इंडिया में भी थी, हाँ हाँ, सो अभी भी है किसी के पास या फिर? वो मुझे दी गई थी, इट इज़ विद मी इन द लॉकर, बिकॉज मेरी प्रॉब्लम ये है, जब भी मैं गोल्ड पहनता हूँ मेरा नुकसान हो जाता है, लाइक प्लेइंग कार्ड्स आई विल लूज, या मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या मेरा गुस्सा आ जाएगा, सो आई रिमूव इट, no I don't know, it is not with me, or it was in our house, he expired in 1966, my father, he was just 60 years old, but I don't know where is the ring, but ring was not sold, ring was with us. And scholarships पे पढ़े, अपना एयरफोर्स में गए, and then you are able to settle well and everything, so that's very big. मतलब ये you can also and Taya ji did well. मेरे ख्याल से तो एक और चीज ये भी हो सकता है, हाँ. पार्टीशन taught him to be tough, mentally tough and all, because you have seen हाँ. uprooting, so therefore in life whatever future में कोई भी ये obstacles आए, Frankly, it didn't affect me. It was irrelevant. sometimes it doesn't have to For affect you. father and elder brother, नहीं, it पापा, might have. देखो ना ये भी No, that बताओ, is that they felt emotionally, but I'm saying somewhere you could, No, I have never. वो felt. लगता नहीं है, but obviously लगता it नहीं has है. affected. Obviously It's it like affected. आप गाड़ी चला रहे हो और कभी आपके लाइफ में पंक्चर नहीं हुआ, बट जब पंक्चर हो जाते हो और खुद लगाते हो, उसके बाद लाइफ में कभी भी आप चलाओगे। मैं ये You can say कि ताया जी भी 15-16 years पे थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा लाइफ बनाया। He went into a college, he did Ayurveda के Yeah, I doctor can बने, tell it. and you became, so everybody was, they were all raring to do कि करना है, कैसे भी सीखा, है ना, पढ़ाई करी, स्कॉलरशिप से पढ़े, बैंगलोर मैं तो अभी गए। भी बोलता हूँ जो मधु बुआ का, see she was keen to have good clothes, but she had only one suit जो स्कूल का था कपड़ा, तो she used to wear it, come back, wash and make it dry, and next day प्रेस करके she will पहनना। किससे प्रेस करेगी, उसको प्रेस तो होती नहीं थी, तो she will take a tumbler, गरम करना on the chula and then press it. One suit she had, but that is the drive, and because they didn't have much food, so their father said we will keep a buffalo here also in Amritsar, because buffalo will give you milk, it will give you cream, मलाई देगा, घी देगा, दही देगा, और जब ज़्यादा बन जाता है तो वहाँ पर उन दिनों they used to give to the neighbors. पड़ोसियों में बांट। नेबर से भी आता था कुछ कि आज हमने रात ये बन गया, बिकॉज फ्रिज नहीं होते थे, सो यू कांट स्टोर, सो व्हाटएवर इज सरप्लस यू गिव टू अदर्स। लस्सी हम बांटते थे गरीब, तो लेडीज आ जाती थी, लस्सी दे दे जी, लस्सी दे जाते थे। तो जब आप अमृतसर में आके सेटल हो गए और अभी आपने बताया कि आपकी मम्मी को वहाँ पे स्कूल में जॉब मिल गई थी और पापा ने दुकान लगाई थी, उसके बाद आप सब भाई बहनों की मतलब ज़िंदगी कैसे सेटल हुई, आपकी एजुकेशन आपने कैसे परस्यू करी? हाँ, हम तो बच्चे थे, तो मतलब ऐसा लगता नहीं कि कुछ खास गल हुई है, इन द सेंस कि स्कूल जाते थे, उन दिनों फीस भी आधी हो जाती थी, बिकॉज माई मदर वाज ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, और मैं भी गवर्नमेंट स्कूल च सा, तो उतों की चिट्ठी आती थी, फिर मैं पता नहीं 4 आने या 2 आने फीस होती थी, फिर मैं 1 आधा दिन ही पढ़ती थी, कुछ इस तरह।
लेकिन ये है कि हम ना जरा Shripura was a low down area. Low down means the people who settled there were not highly educated. They were shopkeeper types and all, and उसका ज़्यादा चक्कर हुआ मेरे छोटे भाई पे, who was born in Amritsar. He was born in 48. He fell into bad company. But we two elder brothers, we were more into studies. My elder brother was hardworking, not so bright. I was bright. I always stood first in my classes. And in 10th, मैं स्कूल में फर्स्ट आया था, मेरा नाम बोर्ड पे लिखा गया था. ये इन बच्चों को मैं ले गया था दिखाने के लिए, देखो मेरा नाम लिखा हुआ है. 1956 I did मैट्रिक. फिर मैं BSc की, पंजाब में सेकंड आया. फिर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस विच इज़ द प्राइम इंस्टीट्यूट इन इंडिया, वहाँ से मैं फिर इंजीनियरिंग की थी एंड ऑन स्कॉलरशिप. तो ये सारी चीज़ें हैं, धक्के धुक्के खा के सब. मेरे फिर बहनों की शादी, देखो ना, बहन पार्टीशन हुई 47 और मेरी सिस्टर की शादी हुई 53. 6 साल में वी कुड मैनेज टू डू not extravagant marriage but decent marriage. They were not very demanding people. They belong to Amritsar. Amritsar means Amritsariye. You know Amritsariye, Lahoriye. This is a separate type of people. ये होते हैं ना जो चोपड़ा, मल्होत्रा, खन्ना, ये बिजनेस कम्युनिटी है वहाँ की. तो इनका रहना बहना सहना वेरी पॉश, वेरी डिफरेंट. But luckily our जीजा जी was from a very good behavior. तो वो ठीक हुआ. My son was telling कि मेरी दूसरी जो बहन थी, she was very dressy, she was saying. तो बड़ी मेहनत वगैरह करके उसका घर का बर्तन, रोटी पानी सारा करना. We can't afford the servants. तो बेचारी बाहर भी करती, घर में बर्तन करना, झाड़ू लेना, फिर कपड़े धोने, और फिर कपड़े धो के सुखा के फिर खुद ही प्रेस करके अगले दिन फिर पहनने. एंड शी आई रिमेंबर she insisted on getting a bicycle for going to college because she was always late in domestic work. तो फिर उसको साइकिल ले दिया. My brother became a leading Ayurvedic man. He retired as joint secretary in Ayurveda. सारे नहीं ऐसे होते, सब फैमिली नहीं सेटल हो पाई. जो लोग वहाँ पर वो थे ना, मनी पीपल, वो रह गए. पार्टीशन के बाद ज़्यादा लोग टूटे हैं. जो गरीब थे वो यहाँ आके मेहनत करके ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं. बिकॉज आई डोंट नो वाई, मे बी दे वर हार्डी पीपल, स्ट्रीट स्मार्ट पीपल. क्योंकि बिकॉज देखो ना, मेरे चाचा की फैमिली बिल्कुल डाउन हो गई है. दोनों चाचे डाउन हो गए. somehow we survived because our mother was earning, father was earning well. तो ये हर एक घर की अलग अलग कहानियाँ. कोई जम गया, कोई मर गया. लेकिन लकीली मतलब हम सब जिंदा आए, जिंदा रहे और फिर पाँव पे खड़े हुए. कई घरों में तो बड़े मर्डर हो गए थे. फादर मर गया, माँ मर गई, तीनों की बहनों के रेप हो गए. तो ये सब चीज़ों से हम बच गए. टचवुड, इन सब चीज़ों से हम बच गए. और हमने, एज आई टोल्ड यू, हमने कोई तलवारबाजी नहीं देखी पर्सनली. खून खराबा होते नहीं देखा मैंने. लाशें देखी हैं पानी में तैरती, लेकिन मर्डर होते नहीं देखे.
आग 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 लगी हुई देखी, छत पे से देखते थे, दूर लगी हुई आग, शाम को रात को। नज़दीक हमारी गली में नहीं हुई आग। और बिफोर दैट हम तो जून के एंड में निकल आए थे। तो उस पीपल जो वहाँ फंस गए उन्होंने जरूर देखे होंगे सारे पल। आपने किसी का ऐसे सुना था कि कोई जैसे जो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान से, कि वहाँ पे मुसलमानों ने मदद करी यहाँ पे निकलने में, या फिर यहाँ पे किसी हिंदुओं ने मदद की मुसलमानों की, भाई चले जाओ, ऐसी कोई मदद की कहानी? मेरे जहन में कोई ऐसी नहीं है। और जब आप अमृतसर आ गए, ऐसा कभी हुआ कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो कि अरे तुम तो वहाँ से आए हो करके, ऐसे कभी कुछ फील हुआ नहीं, इनिशियली? अमृतसर में नहीं, we never had any। एक्चुअली हमारा श्रीपुरा जो था ना, इट वाज आउटसाइड द सिटी टाइप। जो सिटी का है ना, लूण मंडी एरिया या थिक लालाज जहाँ रहते हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन सिर्फ बच्चों के थ्रू स्कूल में होता था। तो बच्चे नहीं बॉदर करते हमें। वी वर, सिंस आई वाज ऑलवेज गुड इन स्टडीज, तो आई वाज क्वाइट ओके इन द स्कूल आल्सो। तो मुझे नहीं कुछ, एंड आई वाज नॉट इन कॉन्वेंट, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। तो मैंने कभी नहीं फील किया कि भाई रिफ्यूजी है तो इसलिए कुछ होगा। कोई सरकार की तरफ से कोई आपको मदद मिली थी? या श्योर, किसी मदद इस तरह हुई ना कि हमारा प्रॉपर्टी जो थी तो वो सारी, बट वो 3 मकान के लिए हमें अमृतसर का डबल स्टोरी मकान मिला। 9,000 हमारा क्लेम था 16,000 का उन दिनों, 16,000। तो इट वाज लिमिटेड बाय गवर्नमेंट टू लेस देन 10,000। तो हमें 9,900 का क्लेम मिला था। उसमें हमें मकान मिला, उसमें 4 दुकानें थी और ऊपर नीचे डबल स्टोरी मकान था। तो वो फिर मेरे फादर की डेथ होगी ना 66 में, जनवरी, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के साथ ही। तो फिर हमने, मेरी मदर रिटायर हो गई थी, फिर हमने वो बेच दिया। तो यहाँ कीर्ति नगर में प्लॉट लिया हुआ था फादर ने, तो उसके ऊपर फिर अपना घर बनाया था। माता जी के भी प्रोविडेंट फंड वगैरह कुछ या पैसे देते हैं ना स्कूल रिटायरमेंट के, वो डाल के फिर हमने धीरे धीरे अपनाया था। तो मेरा ख्याल हम लकी रहे। वी हैव नॉट गॉन थ्रू मिजरीज ऑफ पार्टीशन। जो थी देखो ना, 47 की बात है तो माय फादर वाज 42 एंड he has created all that wealth in Sialkot. There was a plan to send my elder brother to England for beyond 10th class. वो हम इतने वेल ऑफ थे। We had a motorcycle. तो लेकिन फिर ये सारा वो हुआ। एक्चुअली व्हाट आई फील कि मेरे फादर को वो मेंटल शॉक जरूर लगा है। दैट्स व्हाई ही डिड नॉट सर्वाइव लॉन्ग। ही डाइड एट द एज ऑफ 60। पर उन दिनों 60 भी बड़ी एज गिनी जाती थी। मतलब 65, 1965 में, 66 में लगता था या he has lived his life. Not like today कि भाई कहते हैं 80 तक तो जिए, तो नॉर्मल है 80। So like that it was, but ठीक है, but I was in Air Force and under training, and then I traveled in a very desolate time by train. That was miserable. These are part of anybody's life. खुशियाँ गम तो लगे रहते हैं जिंदगी में। So how did you come to Delhi? ये ऐसा था ना कि हमने वो मकान बेच दिया था और ये प्लॉट पहले खरीदा हुआ था, तो उसके लिए पैसे नहीं थे मकान बनाने के लिए हमारे पास। तो जब वो 16,000 का, हम वी आर आस्किंग फॉर 16,000, और कोई सरदार था वो इंग्लैंड में बड़े पैसे कमा के लाया था,
वो उसकी बड़ी इच्छा थी ये मैं मकान ही खरीदना है, उन्हें 25,000 दे, तो 25,000 we got from there, which we with that money we made this Kirti Nagar wala makan. And by the time my sister who was married to custom officer, वो उनकी पोस्टिंग दिल्ली हो गई थी, मेरी बड़ी बहन थी वो शी वॉज मैरिड टू ए दिल्ली बॉय, वो भी दिल्ली थी, मैं एयरफोर्स में था। तो जब ये कीर्ति नगर आया तो मैंने भी अपनी कोशिश करके दिल्ली में पोस्टिंग करा ली, तो इस तरह से हम दिल्ली वाले हो गए इस तरह। सो आपने लाइक पार्टीशन और उसके पहले बाकी ज़िंदगी कॉमन मैन की तरह भी देखी है और बाकी लाइक एक पोस्ट पर आकर भी देखी है। हाँ। तो अब आपको मतलब क्या लगता है कि जो हुआ ठीक हुआ या फिर कुछ बेहतर हो सकता था? आपकी पर्सनल राय क्या है? Personally, if you ask me, na, we have lost lot of values of nationalhood. मतलब जब हम आज़ाद हुए थे, मुझे याद है हमारे में देशभक्ति भरी पड़ी थी। Everybody was having feeling of India. हाँ, ये मेरा देश है, मैं इसके लिए ये करूँगा, वो करूँगा, बड़ी होप्स थी। And Nehru was very inspiring personality. He did so much for नया देश, वहाँ पर मतलब स्टील प्लांट लगाना, IITs बनाना, DRDO रिसर्च लेबॉर्ट्री, सब कुछ बनाया, तो everybody was with him. It was a nation building phase. लेकिन now people have become more provincialism. ये मेरा पंजाब है, ये मेरा यूपी है, ये मेरा तमिलनाडु है, मतलब वो देश का जो कनेक्शन होता है, मेरी फीलिंग में ये है कि कम हो रहा है, कम हो गया है। तो who is bothered about India? भाई अगर सरदार कहते हैं हमें पंजाबी सुबह दे, तो मिजोरम वाले कहते हैं हमें आज़ाद करो। कैन यू इमेजिन कि उनकी लड़ाई हो गई असम की और कौन है वो मिजोरम, इमेजिन 6 people killed. So this is what I am trying to say. कि ये फीलिंग जो है ना कि what is my देश, वो नहीं रहा। We were full of enthusiasm in schools. हमें मतलब हमारी वो अमृतसर में राजेंद्र प्रसाद जी आए, फिर नेहरू जी आए, और फिर एक और नेशनल लीडर आए थे। तो इतनी हमें जोश होता था ना, सड़कों पे हम झंडियाँ लेके, छोटी झंडियाँ लेके उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुझे याद है सब। तो मतलब ये कि अपनापन होता था। वी नेवर ब्लेम्ड पॉलिटिशियंस फॉर अवर, मतलब उन्होंने देश आज़ाद किया था, उनको थोड़ा हम ब्लेम कर सकते हैं। जैसे आज किसी भी MP को या MLA को गालियाँ दे देते हैं लोग, उनको ऐसा फीलिंग ही नहीं था। कहते ये हमारे आदमी हैं, हमने इनको इलेक्ट किया है एंड दे विल लुक आफ्टर अस। बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है हिंदुस्तान में। कोई आपकी ऐसे फेवरेट पोइट्री या फिर कुछ जो कि थीम से रिलेटेड हो, आप बताना, ये कहना चाहेंगे? पोइट्री, हाँ, मतलब आपने बोला कोई गाना हिंदी हाँ। नहीं यार, इस वक्त तो कुछ भी नहीं याद आ रहा। इंडिपेंडेंस का कहीं पर कोई गाना हो जो आपको बहुत इंस्पायर करे? तो यही गाना मशहूर था बस, वो वतन की राह हमें वतन के नौजवान शहीद। पिक्चर वाला। हाँ, और ये INA के ये टिल्लों शाह नुआ, टिल्लों सैगल शाह नुआ, हम गली गली में नारे लगाया करते थे। इनका केस चल रहा था लाल किले में, तो बड़े पॉपुलर थे ये तीनों, टिल्लों सैगल शाह नुआ, जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब सुभाष चंद्र वाज ऑलवेज ए हीरो ऑफ young people,
he is even now he is very much respected. तो बाद में तो हम शाहनवाज को मिले नहीं, because he was related to my, he was a friend of my sister's समधी. वो आईएनए में इकट्ठे लड़ाई की हुई थी उन्होंने, ये दिल्ली के निवास. हाँ, तो शाहनवाज बरात में था. हाँ, 6 फुट 2 इंच आदमी, टॉल पर्सन, मिनिस्टर भी रहे हैं. और कुछ आपको इस फेस का याद है, डिल्लो सहगल शाहनवाज कैसे एनआईसी, मतलब लोगों का परसेप्शन क्या था? नहीं, वो पीपल, हम सबको यही था कि देशभक्ति का जो विचार है, देशभक्ति में कूट कूट के भरी थी. या फॉरेन कंट्री में जाके फौज बनाना, फिर लड़ना और इम्फाल तक आना, तो मजाक थोड़ा ही है. चाहे मतलब कामयाब नहीं हुए, लेकिन आप ये सोचो कि अगर ब्रिटेन हार जाता, एलाइज हार जाते, तो सुभाष चंद्र ने प्राइम मिनिस्टर बन जाना था, ये ना. फिर हिटलर और जापान की जीत हो जाती, तो ये सारी हिस्ट्री चेंज हो गई ना. बट सुभाष इज टू बी respected because his aim was not Japan or Germany. His aim was independence of India. तो उसने कहा कि ये मौका ठीक है, ये फंसे हुए हैं, और इंडिपेंडेंस क्लेम स्ट्रॉन्गर. तो आपका नाम सुभाष चंद्र रखा गया, तो कहीं सुभाष चंद्र बोस से इंस्पायर्ड था? पता नहीं, उन दिनों ना ये नाम बहुत कॉमन था. मेरी क्लास में 4 थे, सुभाष 1, सुभाष 2, सुभाष 3, हैं सारे चंद्र, सुभाष चंद्र. एंड मेरे बड़े भाई का नाम है सतीश चंद्र. वो नाम भी बड़ा पॉपुलर था. कैन यू इमेजिन कि मेरे अपने दोस्तों में बड़ा भाई सतीश और छोटा सुभाष, 4 आदमी, ये कम्बिनेशन. तो ये जो सुभाष मारवा है, इसके बड़े भाई का नाम सतीश है. और जो मेरा वो सतीश है ना, एससी जैन एयरफोर्स वाला, उसके छोटे भाई का नाम सुभाष है. तो सिमिलर कॉम्बिनेशन सुभाष और सतीश, पता नहीं क्यों, बिकॉज सतीश हैज नथिंग टू डू विद पंजाब, इट इज ए बंगाली नेम, सच्चा ईश. तो पंजाबी तो रामलाल, श्यामलाल, खरैती लाल होते थे. So hi, I am Dr. Jyotipunj, and I am a professor of anesthesiology at All India Institute of Medical Sciences in New Delhi. So I just want to talk about something very personal here. So as a child growing up in a forces house, I frankly speaking, I never felt what partition was, because partition was just something which we would all read in our textbooks, and I knew that okay, my father did migrate from Pakistan and came to Delhi, but it was nothing, I mean, I never felt it or anything. So it was just the fact that okay, we were, I knew my dad's family came from Sialkot, and then they went to Amritsar, and then they were based in Delhi. But while doing my schooling and then my medical college, and then finally, I'm around 50 now, so all settled in life and everything. So one day, a few years back, I was speaking to my father, and he said, there are some fill in the blanks in my life, and in those fill in the blanks, I keep on imagining my and remembering my homes which are in Sialkot. So now that when I think of it, I must be very foolish, because I told him, yeah, why not, let me I'll take you to Pakistan, let's go and see those houses, without realizing that the very step of going to Pakistan
Pakistan to do something like this is not an easy job at all. So I called up the Pakistan embassy, and the person on the other side was very polite. He said, बीबी पर आपका रिश्तेदार कौन से हैं वहाँ पे? तो I said, no रिश्तेदार, and I thought being in a government hospital is a good enough testimonial. You know, I said, I'm in a government hospital, and I just want to go, and I'm going to show my dad and my buas the houses, and we are going to come back. But I realized soon that it's not very easy, and I need a sponsorship letter from every city of Pakistan that we are going to visit. So I have studied 9.5 years in Aligarh Medical College, and then I wrote to so many of my friends, you know, my Muslim friends who I thought they would, who I knew many have relatives in Pakistan. So while I wrote to them, they all were so happy, and they were also very forthcoming. But unfortunately, people knew, people had relatives and friends in Islamabad and Lahore and Karachi, but there was no one in Sialkot. Finally, while I was trying to find a connect in Sialkot, I connected to my Mamu, Khalid Mamu, and we call him Mamu because he's my Mama's best friend. So he stays in Holland. So I told him, you know, I said, you know, my dad wants to go there, and if there is some way that, and obviously Khalid Mamu knows my family, my mother's family especially, since maybe last 50 years. So he said, beta jaan, karta hu, main kuch sochta hu. So after few days, I was so surprised that after maybe 2-3 months, not few days, after 2-3 months, I got a letter on Facebook telling me that there is a family in Lahore, and they are ready to sponsor us. And I knew this is not an easy thing at all, because we had never met that family in Lahore, they had never met us, and here there was a person, an angel whom we had never met, and he was the one who was ready to sponsor not only me and my dad, but also my bua. So he was ready to sponsor 3 people whom he had never met. And it was a pleasure communicating with him. And by chance, before we were to travel to Lahore, he also traveled to India actually that time to show his young daughter. She was suffering from an ailment, and when he came here, he sounded so mature, but when I met him, he was 10-12 years even younger to me. But what a great man, and what an amazing wife. They were so affectionate right from the word go. So we met them in India. They had got the sponsorship letters for us, and we had 3 letters which he had got. But as my dad decided to go, not only his older sister who's 8 years older and she's in Delhi, she wanted to go, but there was another sister who was in New Zealand, and she also wanted to go, and she's also, I think, 5 years older to my father. And these 3 people was okay, you know. I said okay, you know, we were 2, and then we were 3, and then we were 4. But then my one bua's husband, who is in Delhi, and he said, I also want to go because I also born there. And I said, you know, I can't manage this, you know. And as if this wasn't all okay, my bua who's in New Zealand, her son, who's also maybe about 8 years older to me, he said, oh, this sounds interesting, I also want to go. So we were a group of 6 people, and I was getting palpitations, you know, because I was the one who was trying to going to get the sponsorship letters, and then I had to go for the visa. But anyway, Akmal, the gem that he is, he never minded all these stupidities which were happening. He says, oh, don't worry, Dr. Jyotsna, I'll do the sponsorship for you. So finally everything was ready, the sponsorship letters were there with us, and then I one day you know, got all the forms done and everything, the visa forms, and then I went to the Pakistan embassy. And so, you know, you always see Pakistan embassy when you're going
on the Embassy Road, and it's always a very intimidating building. And I want to confess that when I entered and when I saw Jinnah's picture there, it just took me like, we always see Gandhi ji or Nehru ji, and then I said, okay, this looks a little, it looks a little different, it's a little, but as soon as everyone over there started speaking to me, it was very, very warm. Even in the embassy, they said, okay, Bibi, aap idhar aiye, aap idhar baithiye. Then I went met the Deputy High Commissioner. He was again a very polite man, and I told him that I had the sponsorship letter of Lahore, but I told him, I said, I want to go to Sialkot because that's where my father's ancestral home is, and but I don't have any person who's going to sponsor me there. But I assure you that I'm going to go in the morning from Lahore, and I'm going to go and we are going to go and look for the house, and then we are going to come back the same night. So I'm sure it must have been a difficult decision for him, but finally he gave the visa to all 6 of us, and I thought the job, I was very happy that I got the visa for all 6 of us. And then the journey started. We went from Delhi to Amritsar, and Amritsar being the first place that my father's family went to, so they were happy to trace their roots even in Amritsar, which was right after the partition. And it was very amusing for me and my cousin who came from New Zealand to see how these 4 people had turned into their 70s or 80s. They were no longer 70s, they were those 5 or 6 years old, they started behaving like that, and how excited they were. And then we crossed over from the Atari border, and as we jumped from or we walked past that border line, which was from India to Pakistan, and as we walked towards the land of Pakistan, and I suddenly looked back, and all these 4 had tears in their eyes, and they were so emotional. And especially my buas, they said, oh my God, we never thought कि हमें कभी ये पता ही, हमें कभी ये ज़िंदगी में हमें नहीं लगता था कि हम वापस इस धरती पे हम कदम रख पाएंगे. So it was no longer a land of Pakistan, it was a land of their home. And so as we walked there, and from where? जहाँ से stop करा था. Okay. So as we walked across, all 6 of us, so for me and for my cousin who's from New Zealand, it was something a little, it was a very frivolous activity. I would confess that it was a little frivolous, we were like little excited, like little 2 elves, that okay, we're just taking our parents to this. But when we landed means when we just walked, and it's strange how it is just a step away, you're at one step you're in India and the other step you're in Pakistan. That's how much is the distance actually. But then as we went and we walked towards Jinnah, we left Gandhi and we walked towards the Jinnah's photo, and then we walked towards that land, and there are Akmal and Sana, who are our friends from Lahore. They were right over there, that come all the way from Lahore, and they were there to welcome us. And from that moment on, the land of Pakistan was amazing. It was so warm, and never for a second did we feel that we are in a hostile country. It was an amazing, very warm and affectionate people. So we stayed in Lahore Gymkhana, and Akmal and his mother and his father and his wife, and they welcomed us with more than open arms. And so one very interesting thing I want to tell everyone over here is that we didn't realize, but my dad had actually, and because of my dad, because he's from an ex-Air Force officer, all of us had that police visa. So I don't know whether this is a real term, but it's the actual term, but what it meant was that whichever city we had to go to,
we had to report to the police station every day over there, but because it was a sensitive, we were sensitive group of people, I think, because of that Air Force connection. But because of Akmal, who's such an angel, he told everyone that nobody is going to do any clarifications from uncle, that is my father, or any of the members, because he said this is a trip of a lifetime for them. They have come looking for their roots. So all the queries you have, you ask me. So we never had to face any of that that issue. And from Lahore Gymkhana, then we walked around the city, and I think I mean, I'm ashamed of it, but I cannot speak Punjabi. But because the accent of Punjabi of my buas and my dad is exactly the same as they speak in Lahore, because Punjabi also has lots of accents. And the immediate connect with everyone was there because of the language also. And from there, then we had an amazing journey to Sialkot. But before that, the surprise was that while we were sitting with Akmal and chatting with him, and my dad said, my grandfather, means my great grandfather, he said he belonged to a place called as Bhartawala, and that was on the way. So he said, Akmal immediately said, uncle, aapko wahan jana hai? Papa said, is that possible? He says, of course. And his relative was a zamindar in that area. So our journey started from Lahore, and we were in 2 taxis with these 2 very, very warm taxiwalas. And then they took us to Bhartawala. And we were so surprised that as soon as the cars reached Bhartawala, there were 200 people there with rose petals in their hands, and they were ready to meet us with those rose petals. They showered those rose petals on us, and nobody knew anyone. Nobody, I mean, my dad used to go there as a kid, but obviously he didn't remember anyone or any of the names. But such was the case even on Bhartawala side. But people on both the sides, they were just overcome with so much of emotion. They were all tearing up. They were hugging each other. The women were hugging my buas and me, and the men were all overcome with emotions. Everyone was crying as if, the son of the soil has come back. And then the journey to find the great-grandfather's house was also very emotional. As all the 200 people, they went around with us. We found the house. Every house had prepared lunch or tea or pakoda, samosa, chai, so much. We didn't have time to go to every house, but we did visit 2 or 3 houses. We had a cup of tea, some fruit, some mithai, and then there was a person by the name of Mithu Bhai, who was from a neighboring village, and he took us home. And yeah, so he was from Daska village, and he says, uncle, आपको तो मेरे घर आना है पहले, सियालकोट जाने से पहले आप मेरे घर आओ. So when we went there to Dassa village, and Dassa village also happens to be the ancestral village of my Fufa ji, and when we went there was so much of food which was prepared for us. It was dinner time, and he had about 20-40 dishes over there, and he knew that some of us are vegetarian. And in that little village of Pakistan, he could appreciate that he needs to put the vegetarian food a little away. He needs to prepare a vegetarian dishes, and they were not 1 or 2 dishes. They were about 10-20 of vegetarian dishes and 10-20 of non-vegetarian dishes. And the whole family, it was a joint family of, I don't know, some 4-5 brothers or their fathers and chachas and their wives and their children. Everyone was there to visit us, and what a beautiful evening we had there.
And though Mittu Bhai wanted us to stay the night over there looking at the stars in the Khet, we said no Mittu Bhai, we have to go to Sialkot because that's where, and we don't have much time. So we bid a very tearful goodbye to Mittu Bhai and his family, and from there then we went to Sialkot, and in Sialkot again the hospitality was something which cannot be explained in words, because the hotel guy, he didn't take, we were in what, 4-5 rooms, hotel rooms, he didn't take any money from us, he didn't take any money even for the food. And when my father said ki nahi humko pay karna, I mean he said it in Punjabi, I am just paraphrasing it, and he says I want to pay the money. He says nahi, aap to apne ghar aaye ho, aap kyun paise, कहता कि जब आप अगली बार आओगे आप तब हम आपसे लेंगे. So it started from there, and then all of us, we walked into the ancestral the town of Puran Nagar, and we found the house, and my dad has described that wonderful journey of how we found the house, and over there also everybody had come together, about 100-200 people, because they came to know some people from India looking for their house. So everybody was on the roads, trying to help us out, and we found the house, and quite unknown to us, that was also the day that Kasab was being hanged in India, and we had no clue about it, and but there was, I mean, there was not even any palpable tension, not at all. It was all very warm there, and then we had tea at our neighbor's place with a lot of mithai and a lot of warmth, and the feeling that with a yearning that maybe we'll meet again, but I think all of us knew that that's never probably going to happen. And thus we came back, and from that beautiful journey, we found the house. We also went to Trunk Bazaar in Sialkot, where we were able to find the old clinic of my grandfather. He used to be a doctor, and he had a shop in that Trunk Bazaar. It was no longer a clinic, it was actually another trunk shop there, but the owner of that shop also knew that, I mean, he was also of my generation, right? So he, like, we all have just heard stories. I'm just probably one of the few lucky ones who has actually gone on to experience a little part of their journey. But that man over there said, yes, I know that my father used to talk about a gentleman from India who had a doctor's clinic here, but they left in partition. So, just these little threads of bond which you're trying to connect, and we are glad that we were able to do that with the warmth and warmth and love of the people of Pakistan. And now that I'm on screen, I would probably, not probably, but I would really want to thank those angels, Akmal and Sana, who are in Lahore, for making this journey so much possible. I'm still in touch with them, though it's been now ages since we met them, but Eid wishes or Diwali wishes are always exchanged. And also a special thank to Khalid Mamu, who's in Holland, and actually he's the one who spearheaded this association, which has gone on to make so much of a journey which is beyond words for me to explain. So as a child of partition, I would say that I now understand it more, and while we undertook this journey, me and my cousin, we realized that it was much more than probably both of us had realized, that how much it meant to these four of our parents whom we had taken with us. And I'm so glad that they were able to go and fill in the gaps, fill in the blanks of their lives, and that's it. Thank you so much. तो वहाँ से ना हम पानी गड़वी की पानी की Speak actually too fast.
No, no. हैं? ठीक है, ठक 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 तू ठक। प्रोफेसर है, तुम अरे